for this. Sorry, right click on this data definition. Here you can mention here CDS table event CDS table अभी while creating this it will ask here, you can save it. Now here you can see, right, table functions. Yeah, this is the table functions. Sorry, ये है table functions. So in table function you will get this syntax by default. आपको by default मिल जाएगा ये syntax. अगर आपको डिफॉल्ट नहीं चाहिए, राइट, टेम्पलेट जो है आपको नहीं चाहिए तो आप ऐसे भी करके डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे सीडीएस व्यू में भी क्रिएट कर सकते हैं तो आपको ब्लैंक आपको मिलेगा पेज, और इसमें आप अपना कोड लिख सकते हैं। ये है जैसे तो सीडीएस फंक्शन, ये है मेरा सीडीएस फंक्शन। सो यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। So we can give annotation. And enter text. Here I can give same name. CDS table function. डिस्क्रिप्शन दे दिया कि हम टेबल फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और इसका सिंटैक्स एक्चुअली मिलता है टेम्पलेट, राइट। हाँ, लेकिन मैं ऐसे दिखा रहा हूँ हाउ यू क्रिएट डॉट डॉट। So define table function. Now I will give function name. It should be same that DTL underscore CDS underscore table underscore FUN underscore 01. उसके बाद define table function return ये एरर क्यों दे रहा है यार। DTL CDS table function.
Okay, sorry. Where I'm giving, there is no description. This is the CDS view. Okay. Return. ओके, रिटर्न पैरामीटर तो क्या रहेगा, मैंने अब क्या लेने वाले हैं, लाइन एंड दिस वन, सपोज आई विल कॉपी line copy. Now here I will mention for implemented by method implemented implemented by method class name CL underscore CDS table function MUIC function call any method to get data, right? So this is the syntax for creating the table function. Now first we have to create the table function. Now if you double click on this, you will not get any class because class is not created till now, right? Now first steps is to create the table functions with return parameter or like in class and method, and this tr will go first, then second tr will go first for the class creation. So now I am going to create class AMDP classes. So here same class name you have to give. Second class name is this one. Let's copy it. Have a class, the class AMDP table class or table function, right? So in PR you have to save it. Now here, this is the system generated template for class. This is the declaration, definition, and this is the implementation of the class. Now here you have to declare your variables and interface method in public section, correct? So here for to make this class as a AMDP class, we have to provide the interface AMDP interface. Then only this class is called AMDP class. Okay. So there is no separate steps to create AMDP class. Normal class only. But if in the declaration, if AMDP interface is declared, then this class is called as AMDP class. So here interface will be like this, public section. Public section I will provide interface. If what is the interface name? If underscore like this. If underscore AM. If underscore AM
Yeah. So this is underscore. There are lots of markup. And this one. You have to remember this. If this interface is called in this class, then it is called MDP classes. Now this is the declaration part. Now you have to implement. So there is some rules for the MDP class, right? So this is the rules of my database functions for STP. Now what you will do, you have to implement the method, right? So interface is declared. Now you have to declare the method in the class. So how you will declare the method in the class? By the syntax class underscore CLASS class underscore method. Now what is the class underscore method? Simply we can give a method also. So if you are declaring with the class, right, with the naming space here, then it is called static method. And you have to do like that only. Because here you are calling, this is this symbols to call the static method. No need to create the object of a class. Implicitly, it will create the instance of an object and it will call the method. That is called static method. So here, what happened by defining this, you can declare your method. Method is get data, correct? Get data, and type you have to declare. So for table functions, for display for table function. What is the table function name? This one is a table function. So it's table function. Now syntax is over. Okay. Now it is saying that you have declared, but you have not implemented. Now you will implement the method. Get underscore data and method. Now here it is also saying something errors, right? CDS is scalar or table function. So there are two type of, I have said, right? Scalar and table. Scalar and table functions. So you have to define how you are going to implement this, right? And also there is database function or like database procedure, what you are going to define for this. So now I will define the method or, so what is the syntax? This is a syntax by database function for SPV for database. I'm going to use function, not a procedure, by XMPP and SQL script. SQL script you have to give using SQL script using tables, right? Okay. Here you can give what is this. Yeah, language and also language and this.
or not or by or language. And what is by database process? This is wrong. By database functions, language SQL script using you can say schema also, but we are not going to use the schema, we are using tables. VBA. Okay. Now, since I have one more option option is readable. Read one. Yeah. Now, what is the error? The body of empty method cannot be empty. Yeah, it is empty. You have to write something. So there is a different syntax here to write. Internal table PPA equal to select here I line. So maybe select from PPA. Yeah. So what is the error? Okay, there is no close. There is some syntax you have to follow, right? Column, not dot. So सेमीकोलन आएगा बस हाँ so there is invalid column. So there is CL and T, right? CLNT क्लाइंट एक बार देख लो CLIENT होगा हाँ As here what's this client, right? As client. CLINT client. What is the error? Return parameter. Everything is showing. Suppose and return IT VBA. So simple. This is not error what? Okay, sorry. अब आप प्रैक्टिस है ना SQL message return statement with expressions will be defined in table functions. Okay, so in table function it is not defined, so we have to define in table functions also. Okay. Yeah, method. Very simple. Only this is the logic as per your logic. As per the business requirement, you have to write the logic. Now I will show you one by one. First, try to understand the concept for the. Yeah, now okay. Now no error. So return means it will return the value. Now activate it. Okay, now I am going to table function. This is our table function. Activate it, and I will run it. Data preview. See here, lots of Babylon, right? Nearly how many records? Only 100 rows. Okay. This is like how you are going to use. See, right? Very useful. Correct? Useful है. अब इसमें मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा. I have to go somewhere. मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ. मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ. जब ये सिंटेक्स यही है. ओके, मैं आपको
ये भी देता हूँ, माने बड़ा बड़ा स्किल्स क्वेरीज कैसे लिखा जाता है इसमें रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, क्लाइंट डिपेंडेंट। अगर हम लोग क्लाइंट डिपेंडेंट डालते हैं तो हमारा क्लाइंट जो रिटर्न फील्ड होता है वो मैंडेटरी रहता है, ये हमेशा याद रखना है। और इधर पे भी आपको MENDT लेके आना है, मैंडेटरी रहता है क्लाइंट डिपेंडेंट रहा तो। अगर क्लाइंट इंडिपेंडेंट रहेगा तो जरूरत नहीं है। हाँ, ये क्लाइंट इंडिपेंडेंट का ये है क्लाइंट इंडिपेंडेंट। अब क्लाइंट डिपेंडेंट और क्लाइंट इंडिपेंडेंट कैसे देखते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ एनोटेशंस डालेंगे आप डायरेक्ट यहाँ पे। LIN क्लाइंट, क्लाइंट हैंडलिंग एल्गोरिदम। अच्छा, टाइप डॉट टाइप, yeah, so this is you can search client dependent, client independent, inherited। इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है इनहेरिटेड के बारे में। मोस्टली वी आर यूजिंग बोथ ऑफ दिस। सो मोस्टली वी आर यूजिंग क्लाइंट डिपेंडेंट ओनली। क्लाइंट इंडिपेंडेंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको इधर लॉगिन कर रहे हो, राइट। अभी 100 क्लाइंट है, 200 क्लाइंट भी होगा, 300 क्लाइंट, उसमें अलग रिकॉर्ड रहेगा। मान लीजिए उसमें भी सेल्स ऑर्डर आपका 1 2 3 है क्लाइंट 100 में, और क्लाइंट 800 में भी 1 2 3 है, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ जाएगा और वो अदर क्लाइंट का आ जाएगा। वो सही नहीं रहता है, क्लाइंट डिपेंडेंट सही रहता है। इसलिए क्लाइंट डिपेंडेंट मेंशन करना होता है। अगर आप मेंशन नहीं कर रहे हो क्लाइंट डिपेंडेंट तो आपको सिंटैक्स में कहीं करना नहीं है। हाँ, लेकिन इंडिपेंडेंट जब आप सेलेक्ट करते हो तो आपको वो इम्प्लिसिटली वही वही ले लेता है। जैसे मान लीजिए आप ये 100 क्लाइंट से लॉग इन किए हो तो 100 क्लाइंट का ही डाटा शो करेगा, 800 क्लाइंट का डाटा शो नहीं करेगा। लेकिन जब आप क्लाइंट डिपेंडेंट इधर डालते हो तो इधर में हम 800 का भी डाटा ले सकते हैं। ये यूजफुल होता है क्या क्लाइंट डिपेंडेंट में। तो मोस्टली हम लोग क्लाइंट इंडिपेंडेंट यूज करते हैं, तो ये अदर क्लाइंट्स का हम लोग डाटा नहीं लेते हैं। ओके, अगर कोई सिनेरियो कहीं बिजनेस में ऐसा होता है तो वहां पे हम लोग अदर क्लाइंट से डाटा उठाते हैं और 100 में डिस्प्ले करते हैं। उस सिनेरियो में काम आता है क्लाइंट डिपेंडेंट। ओके, तो मोस्टली हम लोग क्लाइंट इंडिपेंडेंट के थ्रू ही जाते हैं, लेकिन सिंटैक्स में क्लाइंट डिपेंडेंट रहना सही रहता है। मान लीजिए आपने क्लाइंट इंडिपेंडेंट के लिए बना दिया कोड, करेक्ट। इन फ्यूचर उनका क्लाइंट बढ़ गया, मान लीजिए US में है, जर्मनी में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विथ डिफरेंट क्लाइंट 200 क्लाइंट, करेक्ट। नाउ US में हेडक्वार्टर है और वो जर्मनी का डाटा शो करना चाहता है, तो उस समय में क्या करेगा, वो क्लाइंट पास करके वो जर्मनी का डाटा शो करेगा। उस केस में सही रहता है। सो ये है। और इंडिया में जो कंपनी रहती है वो इंडिया में ही रहती है, ज्यादातर बाहर कंपनी जाती है तो उसका सेम ही क्लाइंट रहता है। बाहर भी मैं देखा नहीं हूँ इतना डिफरेंट क्लाइंट। सो इधर है आपका सिंटैक्स, इसमें वेयर कंडीशन में भी पास कर रहा है, ये मैं डॉक्यूमेंट आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। अब हाँ, कल मैं डॉक्यूमेंट आपको, में शेयर। अब ये आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, जरूर। क्लाइंट डिपेंडेंट, क्लाइंट ठीक है। डिपेंडेंट कर रहे हाँ हैं, हाँ। प्रैक्टिस। क्या उसमें आपको डाटा देखना है, हम्म। ये डाटा आ रहा है। जैसे मैं रन किया, इधर डाटा आया, राइट, रन करके डाटा आया था, डाटा प्रीव्यू है। हम्म उस डाटा से आप समझोगे कि ये क्लाइंट डिपेंडेंट है कि नहीं है। अब यहाँ पे आपको वेवलेन आ रहा है, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, हम्म यहाँ पे क्लाइंट MNT और हमारा इधर पे रिटर्न में क्या आ रहा, रिटर्न में ये आ रहा है, राइट। तो हमको ये वैल्यू भी डिस्प्ले करना है। तो जैसे अभी हम लोग ने ये रिटर्न में आ रहा है, ओके। पेटेंट क्लाइंट
इसको एक बार मैं कल दिखाता हूँ करके। मैं आउटपुट में क्लाइंट डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ इसमें। यहाँ कुछ सिंटेक्स डालना चाहिए क्लाइंट। तो करिए प्रैक्टिस, सब समझ में आएगा इसमें। इसमें ये अभी डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, हाँ। हाँ, तो इसमें देखिएगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको हम लोग और इनहेंस करते हैं, ये वाला पार्ट। ओके, कैसे हम लोग रिपोर्ट में कॉल करते हैं हमारे एसी 38 में। एसी 38 में भी मान लीजिए कोई एमडीपी हम यूज करना चाहें तो कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो एसी 30 में दो तरीके से यूज होता है, एक तो आप टेबल फंक्शन यूज कर लीजिए, या तो एमडीपी क्लासेस यूज कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए ये टेबल फंक्शन यूज कर लीजिए, तो सेलेक्ट क्वेरी से हम लोग यूज कर लेंगे। अगर हम हम्म। एएमडीपी यूज करना रहेगा तो उसका अलग सिंटैक्स है। तो ये मेथड कॉल करना होगा आपको, ये क्लास को डिक्लेयर करके ये मेथड को कॉल करना होगा। आप कैसे खटिए प्रोग्राम का वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके। हम्म। तो आप ये क्लाइंट डॉक्यूमेंट डिपेंडेंट। शेयर कर देना मेरे को। और एक आप चाहे तो ये स्नैप में भी डाला हूँ, इसमें आपको क्या है ना, ये पूरा है, ये स्नैप में पूरा है। जैसे ये टेबल क्रिएट किया, एम्प्लॉय, ये सैलरी क्रिएट किया, इस दोनों का प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप बना दिया। करेक्ट। और इसको हम लोग क्या किए, एक टेबल फंक्शंस में बना लिए, और टेबल फंक्शंस में एक मेथड डिक्लेयर कर दिए, और वो मेथड में हम लोग ये रिजल्ट ले लिए। ओके, और रिजल्ट लेके हम लोग ये टेबल फंक्शन को रन करेंगे तो दिखेगा। ये दो स्नैप आपका बहुत, अगर ये प्रैक्टिस के लिए है, मतलब आप स्क्रैच से प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना चाहो कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, पूरा एनोटेशन के साथ है। ये एक बार हैंड्स ऑन कर लोगे तो आपको एंड टू एंड आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ। ये हो जाएगा आपका। और ये नीचे वाला प्रोग्राम है कैसे ऐसे 38 में कॉल करते हैं, ये भी बता दूंगा। इसके बाद करते हैं। ठीक है, मैं मेल में इधर ही भेज दो क्या, इधर तो नहीं हाँ जाएगा हाँ, ना। इधर ही। इधर नहीं जाएगा, हाँ। एएमडीपी, सीडीएस व्यू, ये सब एक बार एंड टू एंड कर लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। अभी हम्म। कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। रिप्लाई ऑल। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ एक बार। ब्राउज कंप्यूटर।